ओके सो नमस्कार all of you. तो हमारा जो ओडिशा सिविल सर्विस 2024 मेंस
ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सोशियोलॉजी तार टेस्ट 3 रो क्वेश्चंस आज हम देखिबा। तो ऑलरेडी हमरो टेस्ट सीरीज टोटली अपन जदि देखिबे 16 टा टेस्ट एथरे रहउची आउ सबु 16 टा क्वेश्चंस आउ तार मॉडल आंसर्स ऑलरेडी आपनकर ऐप रे अपलोड हो जाइए। कोर्स रो लिंक करिका डिस्क्रिप्शन रे दिया है, तो सेठू आपण जॉइन करि परिबे। 16 टा टेस्ट होची। फर्स्ट 10 टा टेस्ट आपनकर रिलेटेड टू योर सेक्शनल टेस्ट होची। ऑल 16 tests are basically 3 hour test, full length test। लास्ट 6 टा टेस्ट 3 टा पेपर 1 रो 3 टा पेपर 2 रो सेटा फुल सिलेबस टेस्ट होची। ओके, सो टेस्ट 3 रे पेपर 1 रो pioneering contributions to sociology, marriage and family और social stratification এই তিনটা सब मॉड्यूल आपनकर कवर होची। ओके, सो এটা 3 hours पेपर ता स्टार्ट विथ सेक्शन ए। तो जो मैंने आंसर जो मैंने जॉइन करचंती आंसर लिखि कि आपण पठौचंती किबा नुआ जो मैंने जॉइन करचंती प्रथम मॉडल आंसर रु आपण सिखुचंती तापर लिखि कि पठेबे ताले ताकू गोटे सिंगल पीडीएफ हिसाब रे 9437002210 ए नंबर को आपण को व्हाट्सएप करिवार अछि। ओके, आ जो मैंने क्लासरूम रे दोचंती तो सेठी आपण सबमिट करी। ओके, सो 250 वर्ड से लिखिबे सेक्शन ए 15 मार्क क्वेश्चन उडा। क्वेश्चन 1, हाउ डज कार्ल मार्क्स concept of historical materialism explain the evolution of societies through economic structures? Can this framework address the complexities of post industrial societies? Okay, तो जदि आपण ऑलरेडी लिखि परिबे आंसर ता ताले लिखि कि जो पॉइंट्स गुड़ा मॉडल आंसर रे देछि ता संगे आपण मैच करि परिबे एंड सेथरे आउरी माइंड मैप्स करिका भी आपण एक्सेस करि परिबे। एटा तार मॉडल आंसर्स करिका जोडा आपण पाइबे आपणकर ऐप। तो तार जो डायग्राम सेला कि माइंड मैप सेला सेटा भी आपण देखि से परिबो। ओके, सो मेन जिंस होला एथरे आपण केते वर्ड्स रे आपण को आंसर ता लिखिबार अछि सेटा भी बहुत ही इंपोर्टेंट। ओके, केते वर्ड्स रे आपण को आंसर ता लिखिबार अछि तो सेटा भी आपण को माइंड रे रखिया पड़िबो। काहे ना जदि आपण अधिक वर्ड से लिखुचंती ताले आपण केबे भी पेपर ता कंप्लीट करि परिबेनी, राइट। सो एंटायर आपनकर जो पेपर रो मॉडल आंसर ता से हिसाब रे आपण ताको एक्सेस करि परिबे सेमती। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इवन इफ जदि भी आपण जॉइन करि पाउ नांती टेस्ट सीरीज ता ताले एटलीस्ट क्वेश्चंस उडा ओके आपण देखिकी ताकू सॉल्व कर देबार अछि। काहे कि ना गोटे एडवांटेज कोन रहउछि जो क्वेश्चंस रे टेस्ट सीरीज रो एथरे बहुत आपनकर
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस करिकी क्वेश्चंस रा पकाई छी ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपनकर जहा तार एस्पेक्ट रहउची प्लस सेथरे आउ किछि जिंस ऐड करा होची ओके तेणु जदि भी बुली की किछि क्वेश्चन पड़िला ताले आपण ताको आराम रे आंसर करि दे परिबे ओके तो एटा क्वेश्चन 1 now let us go to question 2 how does the concept of alienation manifest in contemporary gig economies and does Marx's theory still hold relevance in understanding worker dissatisfaction today so eta more gote contemporary आपनकर क्वेश्चन टा रहला तार भी जते बेले आपण आंसर डील करिवे एटी देखंतु स्पेशली पेपर 1 इवन पेपर 2 रे भी जो पर्टिकुलर रेलेवेंट सोशियोलॉजिस्ट से कौन कहि चंती ओके तो क्वेश्चन 2 टा एटी देखंतु एटी यू हैव टू गिव जदि आपण डाटा देई परिबे ताले बहुत ही भलो हबो सेटा ओके एटी गिग वर्कर्स विषय रे पचारछि तो तार डेटा धरिका भी ता सहित देछि ओके 285 वर्ड्स रो आंसर ता रहिछि ओके क्वेश्चन 3 के असंतो हाउ डज डर्कम्स थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी Can this theory account for rising gig workforce in modern societies? Again, ROB, जब देखिए data टिके अपना दबार अच्छी, okay, इटा 258 words, almost 250 words हमको लिखिया करता, पका पकी सेतिकी अपना करा words रे लिखा ही ची, okay. Question 4, how does Durkheim's concept of social facts differentiate sociology from psychology? Can this distinction address the study of modern phenomena like social media trends? So again here 250 words भितर लिखिया करता हमरो 240 words एटा रहिछि and then जो तारा माइंड मैप की डायग्राम सब क्वेश्चन रे तमे कर परिबनी जो क्वेश्चन रे ओके हमको दी तीनटा पार्ट अच्छी हमें गोटे की तीनटा पार्ट अच्छी धरंतु आपण दीटा पार्ट लिखिले आर पार्ट आपण ओके थ्रू ए डायग्राम आपण सेटा ओके लिखि दे परिबे क्वेश्चन 5 को असंतु हाउ डज वेबर्स कांसेप्ट ऑफ सोशल एक्शन एक्सपैंड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कंपेयर्ड टू अर्लियर डिटरमिनिस्टिक अप्रोचेस कैन सोशल एक्शन थ्योरी address the rise of identity based movements एटा हला क्वेश्चन 5 ए जत्ते टाइप रो क्वेश्चंस अछि जोडा आपनकर टेस्ट रे रहउची एटा बेस्ड रहउची आपनकर जा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढिची प्लस ता छोडा ओके सेही पर्टिकुलर एरियाज रो आउ कोन क्वेश्चंस आसी पारे तमने हम एम्ति कहि परिबा कि जदी हमें टोटली एथरे जो 16 टा टेस्ट अछि सब कवर कर दोछु प्राय ता बाहरु और क्वेश्चंस आसीकार संभावना कम अछि ओके क्वेश्चन 6 को असंतो हाउ डज वेबर्स नोशन ऑफ आइडियल टाइप्स हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर आइडियल टाइप्स स्टिल रेलेवेंट इन एनालाइजिंग कंटेम्पररी ब्यूरोक्रेसीज क्वेश्चन 6 एटा क्वेश्चन 7 को असंतो हाउ डज टैलकॉट पर्सन्स concept of social system explain the integration and functioning of institutions in society. Does his framework adequately address social conflict? It question number 7. Question 8 को असंतु what are pattern variables proposed by Parsons and how do they distinguish traditional societies from modern ones? Are these distinctions too rigid for analyzing contemporary globalized societies? ये जो points आपको actually test series रो maximum benefit आपनो केमती नेबे suppose एटा question 8 हैला आपण आपनकर जो शॉर्ट नोट्स बनौचंदी तो मॉडल आंसर्स को देखि कि एही डोमेन रो ए पॉइंट्स रहला सो दैट
अलगा क्वेश्चन जदि भी आसिला ताले भी आपन को किछि प्रॉब्लम हबनी इजीली आपन बनै पारे क्वेश्चन रो आंसर ता आपन देई परिबे ओके क्वेश्चन 8 वी आर डिस्कसिंग तो एटा भी 250 वर्ड्स भीतर लिखिया कथा 258 वर्ड्स भीतर रही ओके सो रिवीजन बेले ए माइंड मैप्स उडा ए डायग्राम्स उडा बहुत आपन को हेल्प करी क्वेश्चन 9 हाउ डज मर्टन्स डिस्टिंक्शन बिटवीन लैटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस contribute to understanding the unintended consequences of social actions? Can this framework explain the impact of technological advancements on society? Question 10. How does Merton's theory of anomy differ from Durkheim's and what are its implications for understanding deviance in modern societies? Does this theory adequately account for collective deviance? Question 11. How do different types of marriage such as polygamy and polyandry reflect the socio-economic structures of societies? Are these forms of marriage still relevant in contemporary societies? Question 12. How does Marx's distinction between class in itself and class for itself contribute to understanding class consciousness? Can this framework explain the rise of grassroots movements in modern societies? Okay, एटा आपनकर सेक्शन ए रहला जोतरे 15 मार्क्स आउ 250 वर्ड्स भीतर लिखिबार अछि सेक्शन बी के असंतु जोरा 20 मार्क्स आउ 300 वर्ड्स भीतर अपन लिखिबार अछि How do Davies and Moore justify social stratification as a functional necessity and what are the limitations of their theory? Does Melvin Tumin's critique offer a more egalitarian perspective? Question 14. How do changing patterns in divorce rates reflect broader social transformations such as gender equality and economic independence? Are these changes weakening or strengthening family bonds? Question 15. How do variations in lineage and descent systems such as patrilineal and matrilineal inheritance affect property rights and gender equality? Are these systems adaptable to modern legal frameworks? Question 16. What are the key role conflicts experienced by individuals in dual income households? Can these conflicts be resolved without compromising family cohesion? Question 17. How does caste function as a form of class in Indian society according to sociological analysis? Can caste-based affirmative action effectively transform the socio-economic hierarchy? Question 18. How does the concept of inequality differ across Marxist and Weberian perspectives? Can either framework fully explain the intersectionality of caste, class and gender? So, a questions उड़ा a combination of simple and applicative questions आउ जो टॉपिक ऊपर previous year questions उड़ा पढ़ी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रु तार आउ टिके एक्सपेंडेड फॉर्म करिका आपनकर एथरे रहिछि सो एथरे टोटल आपनकर टेस्ट सीरीज नाम 16 टा टेस्ट अछि ऑल 16 टेस्ट आर लाइव तो जदी आपण पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड भी अछंती आपण डायरेक्टली विदाउट यू नो रेफरिंग टू द मॉडल आंसर्स आपण आंसर लिखि परिबे मॉडल आंसर भी जमति कि एडा सेक्शन बी रा आंसर सुडा एडा 341 वर्ड्स रो अछि तापर तार जा डायग्राम्स की आपण ताकू गोटे कहि परिबे इजीली जमति आपण माइंड मैप्स वरिका रखछंती सेमति भी आपण ताकू माइंड रे रखि परिबे ओके
So all 16 tests are live now. 16टा टेस्ट आउ तार 16 मॉडल आंसर्स तेणु आपण ताको लेखिकी इधर मॉडल आंसर रु भी लेखिकी आपण ताको पढ़ी पारिबे काहे ना फाइनल जेतेले सेटा तो तमे परे एनालाइज करिबा जेतेले क्वेश्चन पेपर हमर आसी जिवो you will find that most of the questions or rather जदि मु एमती भी कहि परिबे कि प्राय 100% of the questions directly or indirectly आमे जो जो क्वेश्चंस डिस्कस करूछु तारी भितरु ही पड़िबो ओके तो जो माने जॉइन करिसेंती कि जॉइन कर परिबे ताले आपण यू कैन गो थ्रू द मॉडल आंसर्स जदि आपण जॉइन कर पाउनांती ताले एटलीस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस काना ऑल 16 questions okay we will discuss all the questions थरे टिके निजल तक प्रैक्टिस करिबे okay so एटा हमर टेस्ट नंबर 3 थिला then test number 4 next time देखिबा so by end of this year हमें all 16 tests देखि देले almost केना 31st to आपनकर 31st January जो start होची आपनकर एग्जाम तो almost आपनको मासे टाइम मिलिबो फोन तक रिवाइज करिया पई रिवीजन टा बहुत इंपोर्टेंट सेटा मन रखिबे अपार्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल हमर जीएस रो टेस्ट सीरीज चलची आउ बाकी 12 टा ऑप्शनल रो भी टेस्ट सीरीज चलची ओके सब ऑप्शनल टेस्ट सीरीज रे 16 टा टेस्ट रहउची आउ 2500 ऑनलाइन आउ 3500 क्लासरूम रे तार कोर्स भी रहउची सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन प्रॉपर प्रिपरेशन करंतु सो दैट आपण माने जहाँ आपनकर एम रही सेटा जेमती आपण फुलफिल करि परिबे ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट नमस्कार।